सो बेसिकली आईसीएसआई आपका जो इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है भर भर के जो है जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो निकाली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जो अपडेट है, अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो जो भी जो है ये समझता है कि सीएस का क्या स्कोप है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना भाई। मैं आपको जो है एक बार नंबर की वैकेंसी बता देता हूँ, कितने नंबर पर जो है वैकेंसी अवेलेबल है। बाकी जो है एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चेक कर लेते हैं, 5 तो एक बार जो है इंस्टीट्यूट ने अलग से ओपन किया हुआ है, उसके बाद जो है अलग से 2 स्टार्ट किया हुआ है। देन बात करें सो अप टू 30, तो 30 जो है बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज की जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अदर पोस्ट में जो है 10 जो कंपनी सेक्रेटरी हैं उनकी जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो आप चेक कर पा रहे होंगे काफी जो है रिक्वायरमेंट्स इंस्टीट्यूट जनरेट कर रही है बेसिकली, ठीक है। जिस इंडस्ट्री में आप हैं अपना बिलीफ अपने पर रखिएगा, ठीक है। अगर आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहले ही सैलरी आपको ओवर 50,000 पर मंथ मिल जाती है, सो आपका जो 3 साल का और प्लस आपका 1 ईयर का जो टाइम आपने दिया है वो एटलीस्ट जो है 1 साल के अंतर्गत जो है आपको जो पे ऑफ है वो मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट की ओर से न्यू दिल्ली के लिए जो पोस्टिंग आपकी होगी वो लगभग जो है 5 वैकेंसी इंस्टीट्यूट ने ओपन की है। और आपको पता है क्वालिफिकेशन आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो है 50,000 जो है आपकी जो मंथली सैलरी है वो रहेगी। मैक्सिमम एज जो है वो 35 एज ऑन 1 अगस्त 2020, ठीक है। बाकी जो है आप वर्क प्रोफाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, स्किल आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई का कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली उसका इंस्टीट्यूट ने पोर्टल, बेसिकली बहुत पुराना पोर्टल है, यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप जो है कट ऑफ डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सो अलग से जो है कंसल्टेंट जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने 9 ओपनिंग्स जो है वो स्टार्ट की हैं, ठीक है। इसमें अगर हम चेक करें सो 45,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक की आपकी जो है सैलरी बन सकती है, ठीक है। इसमें भी जो है कुछ स्किल्स देखने के लिए मिलेगा, कुछ वर्क प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी पीडीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं सो ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बेहतर जानकारी के लिए जो है वहां पर आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो डेट है मतलब मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, तो आपको चेक कर लीजिएगा। जो भी आपके लिए प्रेफरेबल लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सो इंस्टीट्यूट ने जो है 2 अलग से, ठीक है, नंबर की वैकेंसी जारी की है न्यू दिल्ली के लिए ही। अब अलग अलग बेसिकली इंस्टीट्यूट इस पे अनाउंसमेंट दे रहा है, अलग अलग पीडीएफ के बारे में दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपकी जो पोजीशन है वो भी अलग अलग होंगी, आपके जो वर्क प्रोफाइल है वो भी अलग अलग होंगी। सो एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है अगर अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है अप टू 30, तो 30 लगभग जो है कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट को। और ये बेसिकली रहने वाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन किया होगा, सो द टेन्योर पीरियड ऑफ पोजीशन विल बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सटेंड अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहता है, तो आपको ये जो आपकी जॉब है वो एक्सटेंड कर दी जा सकती है। इंस्टीट्यूट ये प्रॉपर्ली मेंशन करता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं जो नया जो है बेसिकली बैच निकालते हैं, अपना सीएस बनते हैं बेसिकली, सो उनके पास जो है केवल यही चाहिए होता है कि उनको कहीं पे चांस मिल जाए, ठीक है। मेरे साथ जो है बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मैं आपको अगर शेयर करूं, सो उनको जो है बेसिकली सैलरी से उतना मतलब नहीं होता है, उनको काम से मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो है आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। सो उस पर फोकस रखिएगा, सैलरी कितने पे मिल रही है उस पर फोकस मत रखिएगा। बस ये मैंने आपको वो बताया है, जो अपकमिंग बच्चे हैं या फिर अगर आपके पेरेंट्स, आपके जो एल्डर्स हैं वो आपको देख रहे हैं और आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो एक बार उनको जो है ये बता सकते हैं कि भाई ये चांस है, ये चांस है और ये यूनिक चांस है, हर कोई इस रेस में अभी तक नहीं है। तो जिस रेस में जो है हर कोई नहीं होता है उसमें आपके चांस टॉप पर रहे। 5 essential qualities in a great company secretary should have according to ICSA. The company secretary is responsible for organizing the board of directors' activities.
Tasks like monitoring board assessments and taking board detailed notes are linked with controlling management communication and carefully targeting shareholder communications. Multitasking and highly polished communication abilities are essential for a company secretary. Boards rely on the expertise of company secretaries. According to a recent research by the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, ICSA, the company secretary plays a critical role in the successful administration of the corporation in the United Kingdom. The UK company secretary also has additional responsibilities. According to ICSA, they include corporate law, finance, governance, and strategy, as well as offering assistance to the chairman, CEO, and non-executive directors in these essential. However, the board, and particularly the chairman, rely heavily on the company secretary to organize both business meetings and meeting minutes. The amount of responsibility has an impact on the company's ongoing activity, as well as the director's relationship with management. What type of organizational abilities does the company secretary require? Let's discuss. 1. Organizational expertise. A company secretary must be well-versed in the company's operations and background. They must be able to transform governance theory into structures, rules, and processes that are appropriate for their company. The chairman will rely on the company's secretary not only to bring compliance concerns to the board of directors' attention at meetings, but also to give options for action. According to ICSA, the company's secretary must be able to establish and execute these in a way that their corporation can comprehend and follow. 2. Ability to plan ahead. A competent company secretary must always be one current with the latest, with preparations in place. Considering that board and council meeting cycles are schedule-driven, and domestic and foreign compliance responsibilities must be completed on time, this is vital. This means you'll need to be adept at project management, says the UK company secretary, since there will always be multiple ongoing initiatives that will demand your focus at the same time. 3. A keen sense of observation. It is necessary to have a command of the details. A company secretary must verify that the board's job, as well as the work of the wider organization, is carried out accurately, with no errors or omissions. The company's secretary, for example, is the primary point of contact for your company's shareholders. As Deloitte says in a recent research, announcements, correspondence about profits, certification of share ownership, transfers, and other areas connected to stock holdings must all be managed efficiently. 4. Ability to communicate effectively. Company secretaries deal with high-ranking officials such as board members or directors, CEOs, top executives, and typically a large number of high-ranking diverse stakeholders, including regulators, investors, and funders. They must be discreet, diplomatic, tactful, emotionally intelligent, and able to negotiate effectively. They must have excellent listening skills and be able to communicate well both oral and writing. The company secretary must develop collaborative partnerships with all directors, providing objective advice and acting in the company's best interests. The company secretary should support the leader with all development procedures, including board evaluation, induction, and training, in order to promote board development. Deloitte says,
This should include instituting a thorough yearly board, committee, and individual director evaluation and ensuring that the review's tasks are accomplished. 5. Reasonable judgment. A company secretary's ability to appraise and make appropriate judgments, frequently in situations with opposing concerns and goals, is a must. This is especially true considering the high-ranking individuals who together a company secretary must interact. The company secretary also communicates with diverse stakeholders, such as financiers, and is frequently the initial point of contact for questions. To maintain efficient shareholder relations, the company secretary should team up with the chief and the board of directors. In the end, don't forget to like this video and subscribe to the channel.